I welcome you all in the next video tutorial of quality assurance. So dear all, in this video, we are going to cover ISO. So let's start. This is the website of ISO, that is iso.org. So here it is written what we do. So ISO is an organization which develop international standards. So they are developing standards. And if we go to the about us section, so as you can see, this is an international organization for standardization, and it is an independent, non-governmental international organization with the headquarter is in Geneva, Switzerland. Over here it is written. Now let's start the topic of ISO. As you can see, this is the logo of ISO. The International Organization for Standardization is an international standard organization composed of representatives from the national standards organization of different member countries. If you talk about the foundation, it was founded on 23rd February 1947. And yes, it is an independent, non-governmental organization. And there are different type of ISOs like ISO 9001, 14001, 22000, 26000, 31000, and they are of different objectives. For example, ISO 9001 generally deals with the quality management aspects, whereas the ISO 14000 deals with the environmental management, and ISO 26000 deals with the social responsibility. We will focus upon ISO 9000 over here. So as we have discussed, ISO 9000 deals with the quality management and also quality assurance aspects. So there are different type of ISO 9000 like ISO 9001, 2, 3 and 4, and all have different objectives. As you can see, ISO 9000 deals with the quality management, quality assurance aspects, whereas the ISO 9001 have different elements like 20 elements and deals with the design, development, production, installation, servicing. Whereas ISO 9003 has 12 elements and deals with the inspection of testing of laboratories and warehouses. And ISO 9004, it provides guidelines to interpret the quality management and quality assurance systems. If we talk about the history of ISO, that is ISO 9000, it starts with 1987 when the first 9000 series came out. Then it was the second version in 2000. It is the third version, second version in 1994, then 2005, fourth version, and currently this version is in progress. That is ISO 9000 2015. So you have to remember this version that is currently in progress. So yes, there is a simple trick. Please remember this word, CLEPIER, CLEPIER. Then what does this mean? This is a trick for remembering the principles of quality management principle of ISO. C stands for customer focus, L for leadership, E for engagement of people, 4 for process approach, 5 is for improvement, 6 is for evidence-based decision making, and 7 is for relationship management. So please remember the trick, that is, as you can see, CLEPIER. So there are different type of quality management principle that we have discussed. Yes, it should be customer focus. Let me show you the ISO document. This is the ISO document, quality management principle. As you can see over here, so there are different quality management principles from 1 to 7. That is the customer focus. The first principle is important. Every organization has to focus upon the customer if you want a particular growth. Then the second principle deals with the leadership. So we know leaders at all levels establish unity of purpose and direction, create condition in which people are engaged in achieving the organization quality objectives. किसी भी organization का और संस्थान की तरक्की सिर्फ उसकी good leadership qualities की वजह से हो सकती है. अगर हम तीसरे सिद्धांत की बात करें, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें, तो उसमें सब लोगों को साथ मिलकर काम करना, दैट इज एंगेजमेंट ऑफ द पीपल. नेक्स्ट, अगर हम फोर्थ प्रिंसिपल की बात करें, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस अप्रोच. तो क्वालिटी एश्योरेंस में हमने डिस्कस किया था कि हमें प्रोसेस पे ही फोकस करना है मेजरली, और अगर हमने प्रोसेस को ठीक कर लिया तो नेचुरल सी बात है प्रोडक्ट भी ठीक होगा. और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटररेट भी करता है, इसलिए हमें प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच को ही यूज करना है किसी भी चीज की क्वालिटी को मेंटेन या इंप्रूव करने के लिए. हमेशा इंप्रूवमेंट का चांस रहता है, इसलिए जो पांचवा सिद्धांत है, हमेशा हमें इंप्रूवमेंट की तरफ अग्रसर रहना है. तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैव एन ओन गोइंग फोकस ऑन इंप्रूवमेंट इज द बेसिक प्रिंसिपल. सिक्स प्रिंसिपल की बात करें, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. हमेशा हमें रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसने एक साल अच्छा काम नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसके जो रिजल्ट्स हैं उन एविडेंस उनको स्टडी किया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए नई प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट किया जा सके और कंपनी के लिए, कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके और जो भी शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं उसको इंप्रूव किया जा सके. मतलब हर चीज के लिए आपने एविडेंस कलेक्ट करके ही डिसीजन लिए जाएंगे. अगर हम सेवंथ प्रिंसिपल की बात करें तो बिल्कुल
एंगेजमेंट ऑफ पीपल की तरह रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल है, जिसमें फॉर द सस्टेन सक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज इस रिलेशनशिप विद इंटरेस्टेड पार्टी सच एज सप्लायर्स। तो सबके साथ हमने कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सप्लायर्स है, कोई स्टेक होल्डर्स है, जो कुछ कोई भी हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्रिंसिपल ऑफ द ISO quality management principle of ISO 9000-2015. So please remember these 7 principles. So next is the ISO approach. So credit goes to this man, Edward Deming. So it was he who gave the concept of PDCA. What is this PDCA cycle? Plan, do, check and act. And he was also considered as the father of modern quality control. So this is the basic principle, plan, do, check and act, PDCA. मतलब सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, देन आप एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, देन यू विल कंट्रोल, यू कैन चेक, बेसिकली मॉनिटर, ऑडिट और एनालाइज। आप चेक करेंगे जो भी आपने एग्जीक्यूशन की है प्लान की, क्या वो सही हुई, क्या उसके रिजल्ट्स आए, उसमें क्या एनालिसिस आपने की, और नेक्स्ट टाइम के लिए क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे आप और अच्छे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सको। दैट इज एक्ट इंक्लूड द करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो. So remember, plan, do, check and act. So basically these are the processes of ISO, that is PDCA cycle. Credit goes to Edward Deming. Next one, there are different type of benefits: increased marketability, reduced operational expenses, better management control, of course, increased customer satisfaction, improved internal communication, reduction of product liability risk. So these are the various benefits of ISO. As you can see, there are different elements also of ISO 9000, that is the management responsibility, quality management, contract review, design control, document control, purchasing, customer supplied material, product identification and traceability, process control, inspection and testing. So these are various elements that are necessary in ISO management. Yes, of course, the steps. So some steps are mentioned below. If you want to register for ISO, first step, selection of the certification bodies. Then preparation of the questionnaire will be prepared. In the third step, confirmation of the application. Fourth is the most important, first stage assessment. Internal audit will be done at this stage. Document review should be there. Then assessment of the certification, then audit, external audit. Then seventh step, if the major non-confirmation is not identified, recommendation for the registration and issuing awarding of the certificate. So this is the after the audit. अगर audit सही हो गया, सब कुछ चीजें सही हैं, तो ultimately एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ISO मिल सकता है किसी भी संस्थान को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. सबसे पहले सिलेक्शन होगी, प्रिपरेशन किया जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, उसमें कुछ रिपोर्ट्स बनेगी, देन इंटरनल ऑडिट के बाद एक एक्सटर्नल ऑडिट होगा, उसके बाद ही लास्ट में सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर रहेगा. तो आई होप दिस विल गिव ब्रीफ आइडिया. मैंने बिल्कुल ब्रीफ में आपको एक फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है ISO का, एंड वी विल डू इट better in our class also. So thank you all for valuable time. See you in the next lecture.